Hello students, we have already done what an algebraic expression is. It consists of constants, variables and operators. And the parts we covered were coefficients and degree of algebraic expression, like and unlike terms. And we had also discussed how to add algebraic expression. Today, we are going to do subtraction of algebraic expression. This question deals with subtract this algebraic expression from this algebraic expression. So how to subtract we are going to do in this video. We have already done how to add algebraic expression in the previous video, and what are algebraic expression we have already covered in the previous video. So if you want to have a look at that video, you can go back to the video and see that video to understand what an algebraic expression is. So continuing with the topic for today, we are going to do subtraction of algebraic expression and product of algebraic expression. We are going to find product of algebraic expression. So let's get started with the topic for today. Subtract minus 223x plus 7y from 20x minus 3y. मतलब हमें क्या subtract this term from this term. So we have to इसमें से हमें इस वाली term को subtract करना. So we will write the second term first. 20x minus 3y में से हमें subtract करना है 20 minus 23x. तो आपको मैंने बताया था हॉरिजॉन्टल मेथड से हम लोग कर रहे हैं. अगर हम हॉरिजॉन्टल मेथड से करेंगे तो लाइक टर्म्स को एक दूसरे के नीचे लिखेंगे. अगर ये माइनस 23x है तो यहाँ कहाँ पे लिखेंगे इसको 20x के नीचे लिखेंगे. माइनस 23x प्लस 7y है तो ये 3y के नीचे लिखेंगे. अब देखिए स्टूडेंट्स, वहां पर हमारे पास एडिशन थी तो कोई साइन चेंज नहीं होगा. अब यहाँ पर हमारे पास मेन साइन है सब्ट्रैक्शन. हमारे पास मेन साइन है सब्ट्रैक्शन. अगर यहाँ पर हमारे पास मेन साइन सब्ट्रैक्शन है तो यहाँ पर सारे साइंस चेंज हो जाएंगे. सेकेंड वाले में अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा. यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा. So let us see what we will get. 20x, ये minus changes to plus, so plus 23x, it is equal to 43x. 20x 23x is 43x. ये plus में minus 3y और ये हो गया minus, तो minus 7y is equal to minus 10y. This is our answer for the first question. This is the answer for the first part. Question number 2, first part, we have this answer. Okay. Subtract 19x square minus 20x from 15x square plus 5x. So we need to write this term first. Second में से first subtract करना. 15x square plus 5x. You have to subtract minus 19x square plus 20x. ये तो हमने साइंस वही लिखे जो थे. अब हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्शन मेन साइन है. अगर ये बाहर ब्रैकेट के सब्ट्रैक्शन होगा तो अंदर के साइंस चेंज हो जाएंगे. यहाँ पे माइनस है तो इट विल बी चेंज टू प्लस. यहाँ पे प्लस है तो इट विल बी चेंज टू माइनस. नाउ
15 plus 19. 15 plus 19 is equal to 34. यहाँ पे एडिशन है, यहाँ पर भी एडिशन है, जहाँ पर कुछ नहीं होता वहां पर भी एडिशन ही होता है. 34x स्क्वायर प्लस 5x minus 20x is equal to minus 15x is equal to minus 50x. So in the similar way, you can do the C part also, and I'm going to do D part for you. Try C part yourself. So D part deals with subtract this polynomial with from this polynomial. So you will write the second polynomial first. Minus 12x square plus 20x minus 16. Subtract, यहाँ पे बाहर subtraction sign लिख देते हैं, plus 15x square plus 23x minus 17. यहाँ पे माइनस साइन बाहर है तो ये माइनस में चेंज हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस में चेंज हो गया, ये माइनस है तो ये प्लस में चेंज हो गया. Then you will get the final answer. Minus 12 minus 15, it is equal to minus 27x square minus 27x square plus 20 minus 22 is equal to minus 3x plus minus 16 plus 17 plus 1. So your answer comes out to be minus 27x square minus 3x plus 1 is your final answer for this question. I hope you have understood, students. This is your next question. Student, your next question deals with what should be added to 15x plus 13xy plus 5y squared to obtain minus 7x plus 12xy minus 6y squared. So let us do what should be added to this expression to get this expression. So let a be added. Let a be added. ओके तो हम यहाँ पर a ऐड कर देते हैं. So what will be your a? ये पूरा एक्सप्रेशन this whole expression will be shifted to that side and you will get it will be subtracted. यहाँ पे जो भी प्लस में था वो सब वहां जाके माइनस में हो जाएगा. minus 7x plus 12xy minus 6y square को हमें सब्ट्रैक्ट करना है 15x plus 13xy plus 5y square. So subtract this, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है. So we will write this expression first. Minus 7x plus 12xy हॉरिजॉन्टल मेथड यूज कर रहे हैं. 15x आपका नीचे आ गया, यहाँ पर मेन साइन सब्ट्रैक्शन का आ जाएगा प्लस 13xy plus 5y square. You will change all the signs will be changed. ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये सारे प्लस में थे तो ये सब माइनस हो जाएंगे. minus 7 minus 15 minus 22x plus 12 minus 13 minus xy
प्लस 12 माइनस 13 इज माइनस वन एक्स वाई, और माइनस 6 माइनस 5 माइनस 11y square. This is your answer. So this needs to be added. This expression needs to be added to this expression to get this expression. You can check also 15x minus 22x minus 7x are 13xy minus xy gives you plus 12xy. 5y square minus 11y square gives you minus 6y square. So you're getting it correct. So let us proceed to finding the product of the algebraic expression. Simplify. You have to find the product of this algebraic expression. For finding the product, we are going to use the laws of exponents, which you already know. ये देखिए, I will discuss the laws with you when I do the questions with you. First question is, question 1 says 15m square 1 by 3 m cube. You have to multiply these two terms. So how can we multiply these two terms? पहले तो आप लोग इसकी कोफिशिएंट्स देख लेंगे. What are the coefficients of these two terms? देखिए ये एक कोफिशिएंट है और ये कोफिशिएंट है. मल्टीप्लिकेशन में है तो वी कैन मूव इट इन एनी ऑर्डर, क्योंकि ये आ गया आपके पास 15 इंटू माइनस 1/3. ये हमने कोफिशिएंट्स को अलग कर दिया. उसके बाद हमारे पास सेकंड ब्रैकेट में आ गया m square into m cube. This is our second bracket. So when we will cut 15 और 3, ये डिनोमिनेटर में कट हो जाएंगे एक दूसरे से. यहाँ आ गया 5 और यहाँ आ गया 1. So you get minus 5 in the beginning, and then this, what is the law of exponent we are going to use? Let me write. ये देखिए, a raised to the power m into a raised to the power n. मतलब अगर a कोई भी नंबर है या कोई भी वेरिएबल है, वो रेस टू द पावर m है और a सेम बेस रेस टू द पावर n है, तो ये दोनों एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं, m plus n हो जाते हैं, राइट? तो here also we are going to repeat the same thing. ये देखिए आपके पास आया m स्क्वायर और m क्यूब. तो आप देखिए कि सेम लॉ अप्लाई हो रहा है, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी. 2 plus 3, so we get minus 5 m5. We get minus 5 m5, right? So we are going to start with the B part. जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करते रहेंगे, we are going to discuss the laws of exponents we are using in the question. Okay. Students, this is your second question. Minus 6, A 12, B 16, C 20 into 2 into A 10, B raised to the power 2, C raised to the power 3. So what we are going to do, we are going to accumulate the uh, the the constants with the same base, constants or variables with the same base. Okay. minus 6 देखिए, minus 6 के साथ 2 आ जाएगा, right? And same basis हम यूज करेंगे. उसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट पेन यूज कर लेते हैं. A12 है यहाँ पर और यहाँ पर A10 है, तो A12 into A10. ओके.
Next is B16 into B2. Next is C20 into C3. So the same law applies here कि देखिए -6 into 2 आपको पता है -12 होता है. So we are going to write -12 here. अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है a raised to the power 12 into a raised to the power 10. तो कौन सा लॉ यूज कर रहे हैं? a raised to the power m into a raised to the power n is equal to, जब सेम बेसिस होंगे तो पावर्स ऐड हो जाती हैं. a raised to the power 12 plus 10. So we are going to get here a raised to the power 22. So let us do for others. B raised to the power 16 plus 2. So B raised to the power 18 we get here. C raised to the power 20 plus 3. So we get C raised to the power 23. And here coefficient of these terms is -12. So this is your final answer. Okay, students, I hope you have understood the multiplication of algebraic expression. Students, C part says -2 uv square को हमें मल्टीप्लाई करना है 63 u square v square. So again we will club up the same terms with same basis. -2 into 63 in the first bracket, u into u square in the second bracket, v square into v square in the third bracket. So here we get 63 into 2 minus 126. Add the exponents. U raised to the power 1 plus 2. अब 1 plus 2 u raised to the power 3 हो जाएगा minus 126 हो जाएगा. ठीक है, और आपके पास आ गया v raised to the power 2 plus 2, that is v raised to the power 4. So your answer is minus 126 u cube v4. That is your answer for this question.